Hey Harshdeep and welcome on YourPedia. Hello, sir. Thank you. And Harshdeep, let me congratulate you and your entire family for selection in a very prestigious Hindustan Aeronautics Limited and a very wonderful profile which is management trainee and you are electronic engineer. So I congratulate you and your entire family for that. Thank you, sir. Thanks a lot. Harshdeep, I would like to interact with you and know about your entire journey also and also about the entire process, written exam, interview and all. And Harshdeep, there are so many students who want to become part of such prestigious organizations. एंड HAL हिंदुस्तान का बहुत एक प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है और फ्यूचर में सेल्फ रिलायंस की तरफ इंडिया को ले जाएगा इन द फील्ड ऑफ एरोनॉटिक्स। और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो आपको मिली है और आगे बहुत सा एक्सपेंशन होगा। जैसे हमने इस बार भी देखा कि HAL ने जितनी सीट्स एडवर्टाइज की थी उससे ज्यादा सीट बच्चों को उन्होंने रिक्रूट किया है। तो ये एक साइन है कि एक्सपेंशन मोड में है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं और आगे वो अपना जो विजन है उसको एक्सपेंड कर रहे हैं। तो हर्षदीप, मैं पहला स्टार्ट करूंगा आपके बैकग्राउंड से। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप थोड़ा सा हमें वो बताएं। आपने कहाँ से ग्रेजुएशन किया है और कॉलेज का नाम जरूर बताएं। मे बी आपके जूनियर्स आपसे कांटेक्ट करने की ट्राई करें। और फिर उसके बाद की जर्नी आपकी कैसी रही है अभी तक की सिलेक्शन तक की, आपने कैसे किया है और क्या क्या आपने एग्जाम लिखे हैं। आई एम श्योर आपने बहुत सी जगह पे ट्राई किया होगा, कई जगह वर्क किया, कई जगह नहीं वर्क किया। वो सारी जर्नी थोड़ा अपनी आप शेयर करें। श्योर, सर। सर, मैं बेसिकली कानपुर से बिलोंग करता हूँ, उत्तर प्रदेश से। वहीं मैंने अपनी बेसिक स्कूलिंग की। आफ्टर दैट आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, लखनऊ। ये AKTU का एक कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है। वहाँ से जी। मैंने ईयर 2020 में ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट की थी। आफ्टर दैट कोविड रहा, तो उस वजह से मतलब ऐसा कोई कोर में मेरा प्लेसमेंट नहीं हो पाया, बट आई वॉज सेलेक्टेड एज बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट इन बाइजू। हम्म। सो वहाँ मैंने कुछ एक्सपोजर लिया सेल्स का। देन ओके। आई गॉट अपॉर्चुनिटी एज हम्म। अप्रेंटिस इन एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके। मेरा डिसीजन था वहाँ पे काम करने का, बिकॉज क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसा क्षेत्र है सर जिसमें फ्रेशर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज डायरेक्ट लेवल पे बहुत कम है, अनलेस अंटिल यू क्वालिफाई गेट और ओके। इधर डू एमटेक। सो हम्म। आई बिलीव कि वो उसका मेरा बहुत बड़ा रोल रहा है इस सिलेक्शन में भी, बिकॉज इट गेव मी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन व्हाट बेसिकली एविएशन इंडस्ट्री इज, बिकॉज HAL भी एविएशन से रिलेटेड है। हम्म। और उसके बाद फिर मैंने एक साल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद में एज ए ट्रेनिंग इंजीनियर काम किया। वहाँ भी मैंने रिटन एग्जाम और इंटरव्यू के थ्रू मेरा सिलेक्शन हुआ। हम्म। सो बेसिकली वहाँ पे मैं एयरफोर्स के प्रोजेक्ट्स में एसोसिएटेड था इन सैटकॉम डिपार्टमेंट। तो ओके। प्रोफाइल मेरी वहां पर और अभी HAL में भी आई बिलीव सेम रहेगी, बिकॉज यहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनी है एंड आई वाज देयर लुकिंग आफ्टर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सो हम्म। उसका मेरा बहुत बड़ा रोल रहा। मतलब मैंने अपने करियर इस अकॉर्डिंग डिसाइड किया कि मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में ही मुझे हम्म। मैनेजमेंट को एक बिग पिक्चर में रखते हुए अपना करियर ग्रो करना है। सो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू हम्म। परस्यू दीज स्टेप्स। आफ्टर दैट वंडरफुल। सर, अभी जब हम्म। एक साल मैंने अभी कंप्लीट किया, सो देन आई डिसाइडेड टू रिजाइन। और उसी बीच मेरा यहाँ पे HL में क्लियर हो गया था, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स कोर जॉब, आई ऑल्सो ट्राई टू गिव वेरियस SSBs for the Indian Army. I've qualified CDS, INET, as well as AFCAT several times. I've been to Service Selection Board 5 times, out of which 2 are conference out. So unfortunately, my luck didn't work there well, but it gave me a lot of exposure about what basically Indian defense is all about. Because HAL जैसी कंपनी में क्या है कि सर, मैनेजमेंट का काम है, इलेक्ट्रॉनिक्स का डोमेन है, बट you have to work with regularly with armed forces, because Indian armed forces are a major customer of these companies. So कुल मिला के मेरा मिला जुला एक्सपीरियंस इन सब बैकग्राउंड से मेरे को हेल्प किया। एंड एक क्लैरिटी थी मेरे को कि मतलब मेरे को लाइफ में करना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और मैनेजमेंट वाले पार्ट नहीं है, मतलब ये काम कर करके मैंने अभी सीखा। तो हम्म। इस क्लैरिटी ने मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस दिया इंटरव्यू में। बाकी योर पीडिया का जब मैंने रिटर्न क्लियर किया, रिटर्न के लिए मैंने ऐसा कोई खास पढ़ाई नहीं की, बिकॉज इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है। हम्म। मतलब एलिमिनेशन टेक्निक बहुत हेल्पफुल आती है, क्योंकि हम्म। सिलेबस बहुत वास्ट है। अभी मेरे को हम्म। 3 साल हो गए ग्रेजुएट हुए, तो मतलब जॉब के साथ मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं फुल टाइम प्रिपरेशन कर सकूं। सो आई हम्म। जस्ट गेव अ शॉट। लकीली आई गॉट हम्म। सेलेक्टेड।
बाकी हम्म ये है कि स्टडीज के मामले में ये है कि आप क्वालिटी स्टडी कर सकते हो जिसकी वेटेज ज्यादा है, जिसके लिए योरपीडिया मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा। मतलब हम्म मैंने जब इसकी वैकेंसी आउट हुई तो पहला मेरे को योरपीडिया के यूट्यूब से ही मेरे को पता लगा इसका, हम्म कि मतलब इसके क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कैसे मैं मतलब किस टॉपिक को टारगेट कर सकता हूँ जस्ट टू क्लियर बेसिक पार्ट, जिससे मेरा हम्म सिलेक्शन हो पाए। हम्म बिकॉज हम्म एक चीज मैंने जो सीखी है कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यू डोंट नीड टू बी अ टॉपर, यू जस्ट हैव टू हम्म क्लियर द एग्जाम बिकॉज आफ्टर हम्म सिलेक्शन यू बी एट द सेम लेवल। हम्म So after that, I joined a course, get the guidance from you, हम्म Kailash sir, Shubham हम्म ma'am, another हम्म respected faculty at YourPedia. So उनके सपोर्ट रहा, मेरे को काफी मेरी शॉर्टकमिंग्स के बारे में पता लगा। हम्म Basically, you all helped me to brush up my skills, and Okay. touch wood, So here is Hardeep, the result. okay. So I'll discuss with you in detail about your interview experience also. But before that, I will come to written exam. So you were mentioning something about written exam. So for the students, those who are watching, can you please tell them what was the pattern like? कैसा था ये written exam? Or how you can compare this exam with the exams like gate exams and all? Sir, basically, this exam has no comparison with GATE because GATE is purely of technical nature. Like you have Hmm. 65 questions in that, which 15 are of aptitude and rest are of technical, I believe. But here, the written exam was of 160 marks, where there were 160 questions. That is one question per marks. So 60 marks were of non-tech nature, like they comprise of aptitude, English, GS, etc. Other than that, 100 marks was wholly dedicated to electronics. Hmm. So total comprised of 160. Hmm. As Okay. I have experience of non-tech exams, I have written various exams, so I was very much sure about I can score maximum out of that 60 portion because Hmm. as cutoff for management in electronics this year was 99 out of 160 for Hmm. unreserved category. Hmm. So the major chunk one can score well if he has cleared basics of aptitude and English, which I Hmm. believe in my case it played a very good role. Other than that, electronics, sir, it you can say that it is one or two level below gate. So Hmm. one need to have to clear the basics Hmm. for clearing that exam. You have to Hmm. clear basic subjects like control, EMFT, and digital design logic because many questions were asked from that topic and were of Hmm. easy nature. So Hmm. elimination technique also worked here Hmm. in questions. Okay. ओके सो हर्षदीप कितना रिटर्न में मार्क्स आया था और कट ऑफ कितना था? Sir, I just cleared the cutoff with Brink as I scored 101 marks out of 160, and the cutoff was 99 as I mentioned earlier. ओके So, सो आप कट ऑफ से 2 नंबर ऊपर थे. exactly, sir. वंडरफुल. सो हर्षदीप एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ जो मैं प्रॉब्लम फेस करता हूँ एज अ मेंटर. अभी आईओसीएल के भी इंटरव्यू स्टार्ट होंगे. आईओसीएल का कॉल आ गया है बच्चों को और वो गेट के बेस पे है. अब जब इंटरव्यू कॉल आता है तो मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि तैयारी स्टार्ट कर दो. स्टूडेंट्स ये एनालिसिस में पड़ जाता है कि साहब मेरा जो गेट स्कोर है वो कम है, कॉल तो आ गई है पर गेट स्कोर कम है, सिलेक्शन होगा तो है नहीं, तो क्यों तैयारी करनी है. अब आपका केस ये है कि आपके कट ऑफ से 2 ही नंबर ऊपर थे. एंड यहाँ पे भी वेटेज जो है 15% है इंटरव्यू का, जो बहुत बड़ा नहीं है, 85% रिटर्न का है. सो आपने कैसे अपने आप को मोटिवेट एंड पॉजिटिव बनाया कि नहीं आई कैन डू इट, बिकॉज अदरवाइज इट मे बी डिमोरलाइजिंग, नॉर्मल स्टूडेंट्स विल डिमोरलाइज कि आई एम वेरी क्लोज टू कट ऑफ, आई मे नॉट गेट इट. बट अनलेस until you are very motivated, you cannot get very good score in the interview also. So how this particular role plays, I mean, how this thing works, what is your view on that? Sir, I believe that it all depends on perception, what the individual carries. As I Hmm. just had experience of 2 years in aviation and defense industry, I had a belief that I can give a shot, and there are good chances because the profile, what they are asking for, and what I have done, basically is a match. So Hmm. I just gave a shot, Hmm. brushed my basics. So there was never a moment in my thought where it came like कि Hmm. नहीं होगा या मतलब प्रिपरेशन करने की ऐसा जरूरत नहीं है because Hmm. a friend of mine who is working as an PSU only, he told me when Hmm. he gave interview of DRDO, he got Hmm. cleared the written, and there also there is a weighted system like 85 written and 15% Hmm. interview. But the thing is Hmm. that you have to clear 50% in interview as well as in written to qualify for that exam. If you, Hmm. like example, you get the highest marks in written, but you don't even get 50% marks in interview, like of total. So
it doesn't matter, you won't get selected. That happened with my friend also. So the thing was that I try to give my best shot at least, because the problem with sir management trainee is that, because design trainee, you one perceive it like you have to do the technical stuff only, but with the management trainee it is a broad job, a broad nature job. You have to do mm, various kind of stuff. So mm, what I interacted with most of my peers and colleagues who went for interview that day were, they had literally no idea why they have selected management training, or some even gave reasons like galti se select ho gaya, I want to select design training. So that the interviewer who is selecting or interviewing many of people पकड़ लेगा वो. So that might be the case कि mostly कई लोग इस चक्कर में कि मतलब उनका selection ही clear नहीं था कि why they want to join a particular organization, because the mm, person who are hiring are doing serious business. mm, So if they are going to spend so much amount on mm, nurturing an individual, mm, letting his increase mm, his skills and work for a organization such like HAL, so stakes are very high. You have to be very sure and clear about it, which I was, I believe. So mm. that played a good role, I believe. Question. गुड. ओके अर्शदीप, अब चलते हैं हम इंटरव्यू की तरफ. और आप जानते हैं यूरपीडी एक प्लेटफॉर्म है जो इंटरव्यू के लिए मेंटर करता है स्टूडेंट्स को. और यहाँ पे आपकी इंटरेक्शन सुनने जब स्टूडेंट आएगा तो ये एक्सपेक्ट करेगा कि उसको इंटरव्यू की डिटेल पता चले, बहुत डिटेल में, कि क्या क्या पूछा गया था. तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप A to Z सब कुछ बताएं स्टूडेंट्स को, कि जब आप गए तो किस तरीके से क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे, HR के क्वेश्चंस क्या थे, इंटरव्यूज के टेक्निकल क्वेश्चंस क्या थे, वो सारा उनको बताएं, सो दैट जब वो इंटरव्यू के लिए नेक्स्ट टाइम जाएं HAL में तो उनको बेनिफिट हो. Sure, sir. As I was have to report at 11th October 2023 at 10:30 a.m. So I went there at 10:15 a.m. Firstly, you have to register at the desk at security gate. After that, you will have your breakfast. हम्म, Then you will go to the waiting room. So वहाँ हम्म, waiting room में we were made to sit in a row. After that, they were calling people in bunch of 5 to 6 people for the document verification. हम्म, So that was mostly the part where one have to wait, because interview was hardly for 10 to 20 minutes maximum for any individual, which I हम्म, used to observe over that time when I was there. हम्म, So basically, we had our breakfast and lunch over the duration till that our DV wasn't happened yet. So हम्म, we were waiting over there. So DV then happened at around 3 o'clock when my I was called. So DV, you have to make sure that you have every documents with a photocopy which is mentioned in the call letter itself. Be ready, because many people will send back and had to wait for very long because there some documents were missing or some formalities were not filled according to them or as per instructions. So हम्म, document verification hardly took 10 to 15 minutes. After that, we were made to sit in a waiting for the interviews. So हम्म, I gave my interview around 4:30 in evening हम्म, after reporting 10:30 a.m. So that is a bit tedious over there, as many of candidates of different branches were there for the DV as well as for interviews. हम्म. So when I was being called in interview, there were panel of 6 people, ओके. comprising of 5 gentlemen and 1 lady. One was chairman in the interview panel. हम्म, So when I entered, I greeted them all. They asked me to sit. So when I sat, the chairman asked questions from me. It was very unconventional kind of interview, because I believe they don't have time for a conventional interview, which comprises generally of asking intro of candidate, like you give हम्म, basic intro of yourself. So before me, they have my file with हम्म, them. So हम्म, they must have analyzed my profile, which I given my document photocopy along with my appendix, which mentioned, हम्म, which was kind of resume for them हम्म, for any reference. So हम्म, they generally asked me why, मतलब what we have done till now. आप अब तक हम्म, क्या कर रहे थे? हम्म, So that I mentioned what my work experience was and what my profile was. So हम्म, after that, they were curious why I am leaving such an organization like Bharat Electronics, which is a PSU in defense sector itself, and हम्म, want to join HAL. Then I answered my questions हम्म, accordingly, as my job in previous company was of contractual nature as a हम्म, contract engineer there, and com- ha- having that experience of defense as well as aviation industry motivated me to join HAL, as it provides me career security and growth opportunity, and in turn I can use my skill set what I have acquired over there to benefit the company. So it was a हम्म, mutual win-win for both. After that, हम्म, they discussed various.
factors like what my work role was. Hmm. So in management training, what my interaction and other candidates, what I heard was basically they were more focusing on HR part rather than technical Hmm. part. Hmm. And Hmm. for technical part also, no conventional question as such were asked. They asked questions based on my work ex only. Hmm. So they asked me questions in technical, like if you want to design an electronic equipment for higher altitude, so what Hmm. parameters you would consider? Hmm. So I answered accordingly for that question. After that, as I have worked in Airports Authority of India in CNS department, so they asked me question like what are the different ground equipments used in the aviation sector for takeoff and landing. So I answered that. Then the next question was what is ILS, as it is the instrument landing system used for the takeoff and landing of the Hmm. airplanes, and what principle it works on. So I answered that question. After Hmm. that, one gentleman asked me what my project was. So no further detailed cross questioning was done on that part. He just want to know that I know my project or not. So after that, one HR question was asked like, what matters me the most, my individual success or team success, and how does it matter? So as luckily I have worked for over 2 years, so I have faced many instances where these situations arise. So Hmm. I was able to answer that Hmm. accordingly. So that was all, and it hardly took 7 to 10 minutes, I guess, in interview. Hmm. हम्म। So that was सो all उन्होंने what ज्यादा was asked. मतलब आपसे ज्यादातर उन्होंने टेक्निकल उतना नहीं पूछा। Sir, I believe not only me, many people who went there for हम्म। management training interview, not so much technical questions were asked. अच्छा, मैनेजमेंट में उन्होंने मैनेजमेंट केस स्टडीज वगैरह या मैनेजमेंट स्किल्स को कैसे चेक किया होगा, और लोगों से क्या क्या पूछा होगा हर्षदीप? Sir, बाकी लोगों से जैसे one person who hide his experience, like he was very early pass out, but after COVID, unfortunately, his job worked well, so he tried this job. So he tried to suppress the facts that he don't want to, मतलब he hasn't worked anywhere. He's showing this pressure like that. So they caught him and tried to question. So मतलब they were asked कि अब तक आप क्या कर रहे थे, या when he told him, so उसी accordingly वो जज कर रहे थे, मतलब जैसे उसकी प्रोफाइल जैसी भी रही होगी, so उससे उस अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूछ रहे थे, मतलब क्या क्या केस सिनेरियोज बन सकते थे आपकी जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, या आप उस पे कैसे मतलब हेल्प कर सकते हो. सो आई बिलीव दैट वर ऑल क्वेश्चंस which they were asking me. हम्म। अच्छा, आप हर्षदीप, कई बार स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर हम अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जा रहे हैं तो कौन से सब्जेक्ट्स हमें तैयार करके जाना चाहिए, सो व्हाट इज योर आंसर टू दैट? Sir, electronics is a very vast subject to study all about. So basically, what my strategy was after having multiple snap interviews with the YourPedia team, what I realized was कि पहले तो ये है कि आप जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में दो तरह के सब्जेक्ट्स हैं ना, मतलब जैसे सिग्नल सिस्टम वगैरह है, दैट इज गुड हम्म। फॉर रिटन इंटर मतलब रिटन क्वेश्चंस. सो न्यूमेरिकल आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, बट एज सच नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंटरव्यू या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से नहीं बनते हैं इतने ज्यादा. जैसे मतलब मेरे से इलेक्ट्रॉनिक्स का पूछा भी तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पूछा कि किन किन पैरामीटर्स को आप ध्यान में रखोगे. तो जैसे हम्म। जो टॉपिक्स है जिन पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस काफी बन सकते हैं, जैसे कंट्रोल सिस्टम्स है, उस पर पीआईडी कंट्रोलर वगैरह पे काफी अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, मतलब प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से. फिर उसके अलावा आपका माइक्रो कंट्रोलर है, माइक्रो कंट्रोलर पे देयर कैन बी अ गुड क्वेश्चन, वन हैज एक्सपीरियंस ऑफ एम्बेडेड इन अकॉर्डिंग इंडस्ट्री. सो हम्म। मतलब जिसपे प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे अब HAL है वो डिफेंस में काम कर रहा है, तो डिफेंस में बेसिकली यू हैव टू बेसिक नॉलेज अबाउट व्हाट एविएशन इक्विपमेंट्स आर बीइंग यूज्ड. सो एविएशन हम्म। में कौन से कॉन्सेप्ट्स लगते हैं, जैसे एवियोनिक्स में काम आएंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट्स का भी थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि कोई जैसे अगर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है वह कैसे काम करता है. एंटीना एंड DMFT पार्ट, दैट ऑल्सो हम्म। प्लेज अ मेजर रोल. सो हम्म। इंडस्ट्री को उस अकॉर्डिंग एनालाइज करके वन इज गोइंग फॉर NPCIL दैट हैज टू कवर फॉर, आई बिलीव, बेसिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स. सो उसी अकॉर्डिंग हम्म। प्रिपेयर करना चाहिए. वंडरफुल। अच्छा हर्षदीप, आपने बहुत अच्छे तरीके से सारा कुछ बता दिया है स्टूडेंट्स को, एंड वी हैव रीच्ड टू एन एंड ऑफ दिस वंडरफुल सेशन। सो एनी मैसेज यू वांट टू गिव टू स्टूडेंट्स हु आर लिसनिंग टू यू? Sir, I just want to say to the aspirants that persistence is the key. Don't give up easily, because you just have to get a one yes. Multiple no's doesn't matter. Just one हम्म। success is enough. And हाँ, बिल्कुल सही बोला है आपने। बिकॉज देखिए, एबिलिटी, इंटेलिजेंस, हार्ड वर्क,
इन सब चीजों को परसिस्टेंस इन सब चीजों से ऊपर चला जाता है, क्योंकि अगर आप परसिस्ट कर रहे हैं तो चाहे बहुत मेहनत नहीं भी कर रहे हैं लेकिन लगे हुए हैं तब भी कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे आप। सर कंपाउंडिंग काम आती है, मतलब जो आपकी प्रिपरेशन है वेस्ट नहीं जाती, नेवर वेंट टू वेन। नेक्स्ट प्रिपरेशन आपका बेस सेट कर देगा, तो जब आप और अच्छे से प्रिपेयर करके जाओगे यू हैव अ बेस, सो इट यू आर हेल्प्स। राइट, यू आर राइट। चलिए हर्षदीप, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू, एंड आपने बहुत अच्छे तरीके से सारा समराइज कर दिया। नीडलेस टू से यू वर मेंट फॉर दिस जॉब। आपका सारा बैकग्राउंड प्रोफाइल उसी डायरेक्शन में जा रहा है, एंड you are aspirant for those jobs in which India wants to become self reliant। आप फोर्सेस के लिए भी आपने ट्राई किया, और अब HAL में आपको एक बहुत अच्छी पोजीशन मिली है जहां पे इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाया जा सकता है इन द फील्ड ऑफ एरोनॉटिक्स। एंड आई अगेन congratulate you and your entire family for this wonderful achievement, Harshdeep. All the very best for your career ahead, and thanks a lot for your time. थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट।